have any doubt, then you interrupt me after 10 minutes, है ना? I will give you time to interrupt me, है ना? Just note your questions during that, then so that we can cover the as much as we want, है ना? Okay, sir. Okay, so I will give you time to ask, है ना? Don't worry. So please note your questions or query, and then at the time when I am asking you, then you can ask me at the same time, है ना? Okay, so in this lecture we will be going to basically cover the data expression, literal, variable, and identifier. So that these things we have already discussed in the previous lecture. These are the outline. So fundamentals that we have to cover in this actually lecture, we are focusing on the tokens, commands, statements, or variable, constant, what is it, है ना? So basically all these things are called tokens, है ना? Tokens are basically literals, reserved words, identifier, operators. Identifier I have already discussed in the previous class, है ना? Identifier actually it is a name of a programming element. It will be a name of a variable or a function, whatever, है ना? It is just a name for identifying one programming element. Okay, na? So like variable we have also discussed. Variable, it is actually named location in a computer memory whose value can be changed during the execution. So that name of the memory location is called variable. Okay, now we have to start from the literal. So literals are basically any value that we are passing. The value can be of type integer, character, or string, whatever, है ना? So at any value we are passing into the parameter or in the function, or we are using as a in the programming of in the Python, that is called literals actually, basically, है ना? So here you can see we are passing here a vanity university inside the print function. So print is a just function that is already defined by the Python. We can use directly this print as it is, whatever written here we have to type as it is. We cannot make like capital P print small RINT like that. We cannot write. We have to write all the letter as it is, whatever written here. We have to write in the same way. We can write, है ना? This is actually a rule or syntax to writing print statement. So we can pass string inside this statement. So whatever the string we are passing, this string it is called here, it is a literal, है ना? So when we are running this statement on the single line, then vanity university will be displayed on the screen, है ना? Similarly, we can type different string, then different output will be displayed here. So that is just displaying the message onto the screen. We can also pass some numeric values. Here we are passing a 3 is the integer value here in the print statement. So 3 will be displayed here. Here we can pass a numeric value but with decimal points. So decimal points value, that is called here in the programming we call it as a float, and the numeric value with no decimal point, that is called it as a integer, है ना? So integer is denoted by the int as a data type, int is a keyword, and the decimal value or decimal point value, that is called floating point value, that is denoted with the float, है ना? So when we can pass 2.3, then it will be displayed as a 2.3 on the screen as it is saved, है ना? So there are different kind of literals: string literals, numerical literals, boolean literals. We can also pass boolean value. Boolean means true or false. Either a boolean value having a only two possible value, that will be represented as a true, P capital. Here it is a keyword actually. We have to write in the same way, and false in the same way. So these are the two values that we have to write. Literal we can pass as it is. Okay, numerical we can pass integer, float, and complex as well. As we can write complex number. Complex number is represented as xij, है ना? Ij, this is the imaginary part and this is the real part, है ना? Okay, that you are I think aware about this. If not, then you can ask me later also about this. Okay, so different kind of literals are collection literals. These we will study later, है ना? So list literal, tuple literal, dictionary literal, and set literal we will cover later and detail this part. Okay, some other special literals are also there. Python contains some special literal like none. When we are not passing any value to a variable or to any function, then it is called as, or it is denoted as a none. So we have to write like none, none, है ना? So these different kind of literals are there in the Python. So every statement in the Python actually represented with some assignment operation or assignment operator. So assign, or we can represent it with some expression. So statements can be, please mute all, please.
दीदी मैं सुबह से हल नहीं पा रहा था। भाई मूवी बाद में प्ले कर लेना यार, या म्यूट करके रखो यार अपने को, दूसरे लोग भी मूवी देखेंगे फिर तुम्हारी। Okay, so we can represent the statement with using some assignments or assignment operations or some expressions. So assignments can be of simple or multiple assignment we can also do in the Python. And the simple assignment we can assign the value to some variable, and variable based हो सकते हैं, and then it may be also based on the operation. So just let's see the one example to assigning a value to a variable. Okay, so here you can see x equals to 2. Here you can see x is actually a variable, and 2 is actually a literal. Literal means we can just assign this literal to some variable or as a value, है ना? So just sorry, just a minute. Sorry, so we are on this slide. Okay, so here x is actually variable and 2 is actually literal. We are assigning this literal or this numeric literal value into this x variable actually. So here assigning means we are using single equal doesn't mean we are comparing two value. Okay na? Single equal means we are just assigning the value written at the right hand side into the left hand side variable actually, है ना? So left hand side should be some variable, then we can assign the value, otherwise we cannot assign. Means we cannot write like 3 equals to 2, it means we are assigning 2 value into 3. As 3 is a literal or it is a constant value, we cannot change to 3. We can change x, as x is some memory location in the computer. We are denoting x is a memory location, so we can write this 2 at this location, so we can change this memory location. That's why we are able to write this, or we are not able to write 3 equals to 2, है ना? This is incorrect but this is correct. Okay, so when we are displaying print x or x, then we can display this 2 value as written it in the memory location. Okay, so 2 will be displayed here. Similarly, we can write into the x as a 2.3. It means the some memory location, some value will be written into the x that is equal to 2.3. It means previous value is replaced or either it will be allocated in different location. ऐसा भी हो सकता है कि different location allocate हो जाए यहाँ पे. It will be possible that different location will be allocated. So it means the previous location whatever we have used, that will be automatically be erased. We will see later how it will be erased. Okay. So here you can see x is a variable and 2 is its value, and x can be assigned with different value. We have assigned as here 2.3. Okay. So in a simple, you can understand that here assignment is to assume that when a variable changes, its old value is replaced. We are assuming here as what we are assuming here, previous value of x is a 2. When we are assigning x equals to 2.3, it means the 2 is erased and 2.3 is placed here. But in Python it is not happen. Python is different. In C and C++ it will be happen, but in C or C++ we cannot do. If we have used some variable and we are initially we have used 2, but we have, in order to use 2 we have to define its type also in the C or C++ in another programming language like integer or float, whatever. Okay, so at that place we are using same memory location and previous value we are overwriting. If we are assigning like x equals to 3 in the C or C++ or some other programming language, that it means the same memory will be used and the previous value is replaced with the new value. But in Python what will happen? In Python the previous value whatever we have written as a previous value x equals to 2, it is initial value, and when we are writing x equals to 2.3, and what will happen? It will be allocated or it will be replaced or it will be allocated at different location. In Python it will be happen like if we are doing x equals to 2 before, then later we are doing x equals to 2.3, it means the 2 value will be remain at different location. Previously x will be allocated here and 2 is stored here. Later if we are assigning x equals to 2.3, that means new memory location will be created.
So 2.3 will be stored here. Then what will happen with this memory location? Now new value for the x is 2.3. So new then now this x is raised from here, and then what will happen with this memory location? It will be actually automatically deleted by the garbage collector. That is garbage collection in the Python that is working in the background. It will automatically erase this memory. Okay, so this memory will be automatically erased and the new memory will be used. Even if you are using x equals to 2 and even you are writing 4, then it means it will also allocate different memory. 2 is here for x initially and then 4 will be here for x, then it will be automatically be deleted. Even we are assigning same type of value. Here we are initially providing integer value and then we are assigning float value. Okay, a floating point of value or decimal point value. Then it is allocated at different location. Even we can assign the same type of value, or even if initially if I do x equals to 2.3, later if I do x equals to 2, then it will be also be allocated at different location. Okay, so same variable we can use to point or to refer different memory location of different type. Actually in Python we can do it, but in some other programming language like C, C++, Java, these are strictly typed language. If initially we have used a variable for storing integer value, then we cannot store float value in that variable actually, but in Python it will be allowed, है ना? Excuse me, sir. Yes. सर इसमें सर डिफॉल्ट स्ट्रिंग दे देता है x इज इक्वल टू, अगर सीधा लिखें तो वो चेंज कर सकते हैं. कैन वी चेंज बिल्कुल इट? कर सकते हो. x को आप किसी भी रेफरेंस पे ले जा सकते हो. इनिशियली आप इफ यू हैव स्टोर्ड स्ट्रिंग, यहाँ पे हेलो स्टोर कर दिया, लेटर यू हैव चेंज x इक्वल टू 2, यू कैन डू इट. नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि उसका जो डिफॉल्ट डेटा टाइप वो लेता है उसे हम चेंज कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम के लिए. बिल्कुल कर सकते हो ना. नहीं, जैसे हम शुरू में मेंशन कर दें, ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि मैक्सिमम इतना, वैसे हम डिफाइन कर दें कि डिफॉल्ट अगर कोई ना मेंशन करें हम तो वो इंट हो जाए, जैसे मतलब इंटीजर ले ले. Suppose you want to say that things, I'm assuming just this is just cell I'm showing to you. If initially आप क्या कहना चाह रहे हो, x इक्वल टू मैं क्या रख दूं? 4 किया जैसे. 4 लिखा. अब आप क्या कहना चाह रहे हो? अब इसका टाइप प्रिंट करते हैं तो स्ट्रिंग आता है. नहीं, इसका टाइप इंटीजर आएगा. सर वो उसमें होता है, अगर हम इनपुट लेते हैं यूजर से तो वो स्ट्रिंग आता है. अगर इनपुट ले, सॉरी सर, अगर इनपुट ले, इनपुट में इंटीजर नहीं होगा, इनपुट में स्ट्रिंग होगा. हाँ बोलो. यस सर सर, उसे अगर चेंज कर इनपुट सकते हैं क्या? तो उसे चेंज कर सकते हैं डिफॉल्ट को. टाइप कास्टिंग होता है ना, वो अभी अपन जस्ट कवर करेंगे, डेटा टाइप कवर करेंगे तब. ठीक है, रुको जस्ट वेट करो थोड़ा सा. इनपुट में भी कर सकते हैं सर उसे. हाँ, टाइप कास्टिंग कर सकते हो आप, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना. बट स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, तब कन्वर्ट कर पाओगे आप. ओके सर. है ना. सर असल में वो ऐसा था कि वो ऑटोमेटिकली वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट हो जाए, मतलब उस यूजर ने स्ट्रिंग डाली तो स्ट्रिंग ले ले और नंबर डाला तो इंटीजर हो जाए इनपुट में. हो जाएगा, बट if you have taken like here as a I have taken as a 4 1 2 3 like that, है ना. You can do it. X equals like if you can take y equals to int, ठीक है ना. तो ये x 1 2 3 will be converted as, if I am displaying here y, then it will be displayed as a y 1 2 3. ठीक है ना. यस सर. If you are making y equals to y plus 1, then it will become 124. अच्छा सर, मैं वही कह रहा था कि इनपुट के टाइम पे कह रहा था, वो आप कह रहे हो बाद में, तो ठीक. हाँ, इनपुट के टाइम पे भी इनपुट में आ रहा है स्ट्रिंग. एक बार रन करना. ठीक है. Is it okay ना? Yes sir. I will exercise, just wait. I have to cover the content actually, है ना. I have prepared a whole Excel whole Jupyter notebook file, so you can exercise the different way of writing variable or all these things, data type or all these things, है ना, formatting things that we will see, है ना. Just wait. Just I have to cover the things, है ना. Then okay. So next is a simultaneous assignment. You can do multiple assignment in the Python also by separating by comma. You can assign first value to this variable and 3 value to this variable. So when you are displaying x and y, then it will be displayed as a 2 and 3. Is it clear? So simultaneous assignment you can use.
So it will be very useful when you are swapping a two value. If you have written a program in some other programming language for swapping a two value, then how you have written, like if initial value of x equals to 2 and then y equals to 3, then how you can swap. So you can use third variable in order to swap these two value. Okay, so I am writing just here and the simple cases, like here you can see x equals to 2 and y equals to 3. There are two values, two variables. If you are writing x equals to y, it means x will become 3 at this point, है ना? Initially x equals to 2 and y equals to 3. But if you at this point x equals to y, it means you have written y at the x. So x will become 3. Now y equals to x. So y initially 3 and then y equals to x, it means it will be also 3. We are writing or we are specifying y equals to x. It means the new value of the x will be written to the y. So if you are displaying x and y, that will be displayed as a 3 3. It means the value of the x and y, it is not swapped here. If you are swapping the value of the x and y, you can use third variable, that is called temp. So how you can swap? You can store x, initial value of x is just 2 and y is 3. This is some simple logic. Here I am using third variable temp. You are doing t equals to x, it means 2 will be stored here. Then you are writing x equals to y, it means 3 will be stored here. So 2 will be replaced. We are assuming replaced, but it is not actually replaced. New memory will be allocated. So 3 will be here, है ना? Now we are assigning y equals to temp. So instead of 3, it will be assigned as a 2. So 2 will be here. Now you can see x will become 3 or y will become 2. So if you are displaying, then x value and y value will be swapped. But all these things you can write in a single line. Here you can see, if you are writing x comma y equals to y comma x, or initial value of x equals to 2 and y equals to 3, that means you can see we are assigning this value to this variable and this value to this variable. It will be automatically swapped in a single line. Is it clear? You can write the swapping program in a single line without using third variable in Python very easily. It is clear ना? but temp variable वापस बताना. Yes, sir. Temp variable, you are having a two jar, and a logical thing you can consider two jars. You are having x and y. You want to swap the value. Suppose this jar having a red color and this jar having a green color, है ना? You want to change the you want to fill this jar with the green color and this jar with the red color. How you can do? You have a third jar temporarily. Okay, so what you can do? You can first put this red color into this jar. Okay, and then you can put this green color into this jar. So that is the thing, that temporary storage or some temporary variable, some intermediate or third jar we are using, that is called temporary. Is it clear now? Yes, sir. Okay, so it is actually variable name in the computer memory. We can specify symbol x or y, or we can specify some other kind of variable name to the one memory, है ना? You can use. Okay, but there is a rules to using some name of a variable, actually identifier name of the variable. This is x I have used, and here I have used y, but here I have used temp as a name. So there should be some rule now. So in Python there is also rules to using variable name, है ना? So you can see the name of the variable here, that is called identifier. So there we are studying it as a rules of identifier. So every identifier must be begin with a letter or underscore, which may be followed by any sequence of letter, digit or underscore. So this is a very important rule you have to remember when you are using or creating any identifier. Even when you are creating a name of variable is, it is called identifier for that variable, है ना? So when you are creating any identifier for a memory, so you have to follow this rule. Means you cannot start the identifier with digit. Here it is written, you have to start with letter or underscore. You cannot start like 2x. You cannot write 2x equals to 3. You cannot write. It will not be acceptable. So it will show an error. Okay. So you can see this is an example for writing an identifier for as a variable name. So x1 you can write, it is acceptable, as you can start with the letter or followed by sequence of letter or digit or underscore, है ना? You can follow. So it is acceptable.
It is also acceptable. You can use underscore, है ना? It is also acceptable. But if you are writing 2 Celsius, that means it is not acceptable. So at this point, the compiler will show an error. Is it clear? So it is not as acceptable. Why? We have used here 2. 2 is a digit in the starting of the an identifier. We cannot use. So this will show an error actually. है ना? So these are the rules for creating a name of a variable. है ना? Similarly, you can see the identifiers names are the case sensitive. Means if you are using X and you are using capital X. So this X and this X both are different. As a small letter having a different value as ASCII value, and X capital X having a different value. So computer understand a small x with different value, a capital X with different value. Like ASCII value of capital letter means if you write small a or capital A. So computer understand this capital A as a 65, small a as a 97. Is it clear now? So these are the value as computer understand binary. So we can convert this decimal value into the binary value. Okay. Similarly, we can convert this decimal value into the binary language so that computer can understand. So a small letter will be understood by different value and capital letter will be understood by the different value. So that is called ASCII value. American Standard Code for Information Interchange. That is global code that is globally recognized by all the computers. है ना? So every character in the keyboard having an is ASCII value. है ना? Every character. If you are going from a capital B, so it is 66. So small capital A to capital Z, it is you can go from 65 onwards. है ना? It will be I think on 92. Or small a to small z, you can go from 97 to, but it will be I think 90 now. So it will be till 122. So ये ASCII value है. If you are typing enter key, then it is having ASCII value 10. है ना? Space put करते हो, then space ASCII value of space key होती है, that is 32. So different operators or different symbols in the keyboard having some ASCII value. So Python actually identify name is a case sensitive, means this X is treated as a different way and this X will be treated as a different way. It is a capital letter. We can use X equals to 10. It means one memory location is assigned and the name of that memory location is small x. For here, one different memory location is assigned. Here this value is 10. Different memory is assigned. The value is 5.7. And then capital X is identified for that memory. When we are displaying this X, then it will display 10 as it is small x, and when we are displaying capital X, then it will display this 5.7. So it is a case sensitive. So we have to care about it while using the identifier. Okay now. Next rule for creating identifier that we cannot use some reserved words. There are a fixed word that are defined for a special purpose in the Python that we cannot use as an identifier, name of identifier. In some programming language, there is some other different kind of words we cannot use for, or these words are reserved for a special purpose. We cannot use them as an identifier. So these are the reserved words that are given in the Python. We cannot use as a identifier these as identifier. Like for is a reserved word. We cannot write for equals to 4. We cannot write, but you can write for equals to 4. It is valid. As here f is a capital, but in the keyword it is a small. है ना? We can, it is valid, but it is not valid. है ना? We can do it. So you can see this is an example here. If you are writing 4 equals to 4, then it will show an error. So it is not acceptable. It is clear? Expression are basically used to generate different or new data in the program. Like we can write expression using some operators we will cover also, but slightly, or some basic operator we are going to see here. Just if I'm writing here 2 plus 3, it means we are adding these two value. This is actually literal constant, this is having constant value, and this is also a literal. Both are the numerical literal. We can, if we are writing here plus, it means some expression is there and the some operation will be performed and the new data value will be generated here. Then operation is addition operation, then we can add 2 and 3 and the new data that is 5 will be generated, and that 5 will be assigned later to this x.
So initially we can see what will happen. X memory will be allocated, and then whatever the operation will be performed here, and the new data value will be generated here 5, that will be stored at this location 5x. So when you are going to print x, then it will be printed as a 5. Okay, here you can see, here we have specified asterisk. Asterisk denote actually multiplication and multiplication. Okay, so multiplication operation means 5 into 7, that is 35. 35 will be generated and 35 will be printed. It means this statement will become like print 35. So it will display 35. So 35 will be displayed. Here you can see I have written 5 in double quote. If you are writing any character in double quote, it will become a string. It is not the numerical literal, it is string, है ना, string literal, है ना. We are doing here 5 plus 7, so we cannot add 5 plus 7 as it is here, because addition of a string, it will not display 7 plus 5 as a 12, it will display as a concatenation, है ना. So it will become as a concatenation. Here you can see, है ना. So it is actually concatenation. Concatenation means we are appending the second string into the first string. So 5 is the first string, we are appending 7. If we are writing another string, then we can, if I suppose writing 57 here, and then we are writing 58 here as a double quote. So that means 57 plus 58, that will become 57 58 as a one string. So that will perform as a concatenated. Is it clear? Okay. So it will not show any 50 like 5 plus 7 as a 12, है ना? So, Okay. Yes. so whenever we use quotation marks with syntax print, then that context appears directly. Yes, you can directly put a shift plus a double click in the keyboard. No? In the keyboard you can keyboard you can see. So you are not audible. Hello, please unmute yourself. Aryan. Aryan? Sir, I'm Pran. हाँ, yes, please. Aryan in the mute कर लिया ना? हाँ, ठीक है. हाँ, now what are you asking, please? Whenever we use quotation marks with the syntax print, then that thing directly just appears without using any operation. You can do it also na, but if you are performing any operation like here I am showing you plus with some plus operation na, so it will be treated as a string. It will there will be no plus operation or there will be no addition operation. Instead of addition, string will be concatenated actually, है ना. One string will be appended with another. इसका मतलब ये है ना यहाँ पे, ठीक है ना. यहाँ पे कोई ऑपरेशन ऐसे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा जब हम डबल कोड में लिखेंगे तब, है ना. If I write like that, print 5 plus 7, it will be displayed 12, है ना. अगर मैंने इसको डबल कोड में लिख दिया तो फिर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है ना. तो फिर ये कॉन्कनेटेशन कर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग की ऑपरेशन प्लस को स्ट्रिंग दूसरे तरीके, आप एक नाम, आप अपने नाम का, आपका नाम मान लो इफ आई हैव रिटन नेम लाइक सम ए बी सी, दैट इज अ नेम, है ना. इफ आई हैव रिटन ए बी सी एज अ नेम, है ना, और इफ आई एम एडिंग सम नेम, देन इट विल बिकम सम न्यूमेरिक वैल्यू. नो ना, इट विल बी अपेंडेड. Yes, sir. It will be appended, है ना. So there are different other value, there are different kind of other expression we can write here. This I am initially taking as x equals to 6, okay, y equals to 2, okay. So print x minus y, it will subtract. So x minus y, that will be 4, will be displayed here. X divided by the division operation will be shown with the slash, this slash, okay. So that is also available in the keyboard, you can see. So it will display 6 divided by 2, so it will display 3. But as division operation, this division operation generate floating point value, so it will show 3.0 instead of 3 only, है ना. ये डिवीजन ऑपरेशन हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देगा, तो फ्लोटिंग पॉइंट के डेसिमल पॉइंट तो कुछ है नहीं, then it will add 0 after the decimal 3. So our answer will be 3.0 when you are going to display it, है ना. Okay, so this answer is actually for Python. In some programming language it will provide only 3, है ना. So take care, this is actually language independent statement, है ना. So what is the meaning of double slash? It will provide the floor value as a absolute value, है ना.
So 3.0, if you want an integer value, then you can see instead of 3.4 it will provide 3. So floor value provide करेगा हमेशा ये डबल स्लैश से आप डिवाइड करोगे. जैसे if suppose I divide 7 by 2, so what will be the answer? 3.5 na. So if I write here double slash, then it will provide instead of 3.5 only 3. Is it clear na? Floor value provide करेगा. It will provide floor value. Okay. So similarly you can also, हाँ भाई बोलो. सर जैसे 3.6 आता है तो 4 भी प्रिंट करने का कोई फंक्शन होता है क्या? सीलिंग आप यूज कर सकते हो, आगे जाके आपको मिलेंगे. पाइथन में बहुत सारे फंक्शन है, लाइब्रेरीज है, डायरेक्टली यू कैन यूज. वी विल लर्न लेटर, है ना. बट वी आर करेंटली सीइंग द एक्सप्रेशन is basically designed using some symbol or some specific symbol that is provided in the keyboard, है ना. So that symbol is called as a operator. We are calling it them as a operator. It is clear ना? यस सर. ठीक है ना. कन्वर्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी है, आप टेंशन ना लो बिल्कुल, है ना. अपन कवर करेंगे धीरे धीरे सबको, है ना. सर जैसे अभी आपने कॉन्केटिनेशन का कंसेप्ट बताया, तो सर जैसे अभी हमने एबीसी को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया और +5 लिख दिया ऐसे, तो सर वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा? अगर मैंने इसको एक को डबल क्वेड में लिख दिया ऐसे करके और +5 लिख रहा हूं ऐसे करके, यस सर. हाँ ये हो जाएगा. तो ये BC 5 बन जाएगा ये. ओके. ठीक है ना. स्ट्रिंग के साथ में कुछ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इंटीजर के साथ में आप ऐसे आप करोगे तो वो स्ट्रिंग ही बनेगा एक्चुअली में, है ना. ये ध्यान रखना. ओके. स्ट्रिंग के साथ में ले सकते हो. हाँ सर 5 कोट्स में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग और इंटीजर को कैसे ऐड करेंगे? स्ट्रिंग इंटीजर ऐड करो, स्ट्रिंग 5 कोट्स में होगा तब भी होगा ना वो. जैसे जैसे अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको. एक मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना, ये लिखा है ना, +5 लिखूं तो क्या आंसर आएगा अपना x में? क्या आना चाहिए भाई बताओ. सर इसमें मेरे तो हिसाब से एरर आनी चाहिए. कर रहे हो हाँ, ना, देखो तो कन्वर्ट भी कर रहे हो. हाँ हेलो सुनो, देखो यहाँ पे हम एक्चुअली इंटीजर एज अ वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं. तो ये क्या अज्यूम कर रहा है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीजर के साथ में ऐड कर रहे हैं. बट ये क्या अज्यूम कर रहा है कि हम स्ट्रिंग पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. बट सेकंड जो वैल्यू है हमारी, सेकंड वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू है. तो इंटीजर को आप इंटीजर के साथ में ऐड कर सकते हो, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ में कॉन्कैटिनेट कर सकते हो. ये एज ए इंटीजर ट्रीट करेगा, इसको वैल्यू ट्रीट करेगा जब आप मैं इफ आई स्पेसिफाई इट इज इन डबल कोट, तो एज ए इंटीजर डिनोट करेगा. अब इसको ऐड करोगे तो ये 1 2 3 और 5 ऐड कर देगा. अब ये इंटीजर टोटल बन गया, क्योंकि सेकंड वैल्यू हमारी इंटीजर ट्रीट हो रही है, ये न्यूमेरिक लिटरल ट्रीट हो रहा है. न्यूमेरिक लिटरल को आप परफॉर्म कर सकते हो न्यूमेरिक लिटरल के साथ में, तो वो एरर देगा. ठीक है. अगर मैं इसको एज ए पूरा एक कैरेक्टर स्पेसिफाई करूं ऐसे करके, then it will be treated as an integer in form of string, actually in form of string, है ना. तो बट अभी एक्चुअली डबल कोड में if I have specified in double quote, so it will become as a string. तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही कॉन्कैटिनेशन होगा, है ना. तो इसमें एरर ही आएगी, ये सही है ना. ठीक है. इफ यू आर वांट टू ऐड देन इट शुड बी डबल कोड. इज इट क्लियर ना? ओके सर. ठीक है ना. Okay, so यहाँ पे I have specified actually single multiplication, then it will be perform multiplied operation. So 6 into 2 it will become 12. But if I have specified double multiplication operation, that means it will become 6 to the power 2. ठीक है ना. So you can compute power operation or you can compute square or some any power x to the power by specifying x multiply by with the double multiplication by. Is it clear now? So you can compute x to the power by. So x mod by, this is a percentage operation. It will shows the mod remainder. Actually here I have divided x by 2. Then what will be the remainder here? 0 na. So it will be displayed as a 0. But if I divide 7 by 7 mod 2, then what will be the output? It will display 1. Is it clear now? So in order to compute the remainder, you can use directly this percentage sign, that is called modulus operator, है ना. ABS, it is a direct function. Someone has asked that how we can compute the ceiling. Ceiling के लिए SEIL seal function होता है, directly you can use, है ना. Absolute ABS minus x लिखा तो negative value will be converted as a positive value. So it will show an absolute value. Is it clear? Okay. So now सर these are ABS the में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी.
हाँ, एबीएस हमेशा पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव दोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। एब्सोल्यूट का मतलब ही यही होता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब भी यही होता है ना। हाँ सर। ठीक है, ओके। सो दिस इज द समरी बेसिक ऑपरेटर दैट वी हैव कवर्ड, ओके ना। समरी ऑफ these ऑपरेटर, these are built in numeric operators, है ना, that will work with the some numeric values, okay, and we can generate new data value using this operator with the expression, okay. So these are script. What is script? Suppose I have written one code in the Python, okay na, and we want to use this code later in some other code. So I like this is a file I have written as a file 1, है ना, but I am writing file 2 where I want to use this whole code. Then how you can directly use here this code? So you can save this code by using extension py. Then you can directly use this code in this by importing, by using import keyword, है ना, the import keyword is there, so you can import f1, you can use like that. So you can directly use the functions or the expression whatever you have written inside this file directly in this file. So that file whatever I have saved here f1.py, that is called script in the Python, है ना. So Python support this, we will see, and this script is, it is called as a module actually, है ना. So we will learn, we will also exercise these things also, है ना, in the lab session also. You will be see how we have to write the modules actually, है ना. Or and detail we are also having some lecture, full lecture on the module where we will cover, है ना. So that should be written with py extension, that is called module. When we are compiling this py option, and then when we are writing or when we are saving this file with py option, then when we are importing this py file, then it will be first compiled. So Python support compiler at this time. Python compile this py file, then generated bytecode. That bytecode will be executed by the directly with the Python interpreter. Is it clear? In some f2 file, okay. So these are the programming environments or IDL. I think all of you are aware in order to write the programs or modules. Okay. So these are the basic summary whatever we have covered today. Okay. Now I am showing to you some exercise with the notebook. So you can ask any query with there also. Okay. सर हाँ भाई बोलो. सर आपने एस्काई कोड का आपने बताया था कि हर एक लेटर का एस्काई कोड होता है. बिल्कुल तो होता है. सर हाँ. वो हम एस्काई कोड कैसे प्रिंट करेंगे, मतलब उसका भी अलग फंक्शन होगा? पाइथन में आप प्रिंट कर सकते हो. मैंने आज एक, आप कौन सी बैच कौन सा है आपका? सर EB07 7 की लैब में आपने देखा था आज की वैल्यू प्रिंट करने का एक प्रोग्राम? सर आज लैब सेशन नहीं था हमारा. नहीं, कभी पिछली लैब में कभी देखा? एक नहीं सर, अभी नहीं देखा है. एक क्वेश्चन दिया है हर एक कैरेक्टर का आज की कोड प्रिंट करने का. मैं आपको यहाँ पे रन करके देखता हूँ, अब हो जाएगा. जैसे अभी x इक्वल्स टू मैंने लिखा a, मैं यहाँ पे a लिख दूं a, देन मेरे को आज की वैल्यू प्रिंट करना है इसका. तो एक वो होता है CORD करके कुछ होता है, कॉर्ड है ना शायद, किसी को याद है? ORD. हेलो, ORD. ORD, सॉरी, हाँ ORD, हाँ. और देखो 65 दिखा रहा है ना. सो यू कैन टेक x एज ए इनपुट, लाइक इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू हियर यू कैन टेक इनपुट, है ना, और यू कैन राइट लाइक दैट. सो इफ आई प्रोवाइड हियर हैश और 3, कुछ भी प्रोवाइड करोगे तो 3 का 30 बना रहा है, क्योंकि डिजिट्स जितनी भी हैं, डिजिट्स का भी आज की वैल्यू होता है. कंप्यूटर हम 0 टाइप कर रहे हैं ना, इसमें ऐसे लिखा x 1 2 3, तो 1 का आज की वैल्यू 49 होता है. तो आप देखो, क्योंकि जीरोस का 48 होता है, तो यहाँ पे देखोगे अब मैं 0 टाइप करूंगा तो 48 देगा. इज इट क्लियर? क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्म में जा रहा है. स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर फॉर्म में जा रहा है. अगर 1 दूंगा तो ये 49 डिस्प्ले करेगा. तो 0 से लेके 9 तक, 48 से लेके 57 तक होता है. तो एवरी कैरेक्टर का आप आज की वैल्यू निकाल सकते हो. जैसे मैं सिंपल आज की वैल्यू बताना. 43, क्या कह रहे हो? सर आज के लिए वो होती है हर कैरेक्टर्स के साथ जो एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है. हाँ, दैट इज आज की वैल्यू का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इफ यू हैव रिटन समथिंग इन द फॉर्म ऑफ मैसेज और स्ट्रिंग और टेक्स्ट, देन हाउ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. कंप्यूटर एक्चुअली वर्क इन द बाइनरी लैंग्वेज, है ना. तो बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको? सब न्यूमेरिक वैल्यू में अंडरस्टैंड करेंगे ना. तो न्यूमेरिक को हम देन बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना.
Then first Okay, sir. सर इसमें every सर correct, हाँ बोलो। प्रिंट में सर ORD की जगह अगर इंट भी करें स्ट्रिंग वाले में तो भी आ जाएगी सर ASCII, आ जाएगा। अगर स्ट्रिंग इनपुट एक करें एक कुछ एक मिनट मैं देता हूँ। अब एक 12 दे दिया, नहीं, अगर A किया जैसे एक इनपुट सिंगल वैल्यू किया, अच्छा सिंगल वैल्यू 2 दिया तो 2 ही तो आया। आप कैरेक्टर A फॉर एग्जांपल, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूं नहीं रन करो प्रोग्राम एक बार। अभी? यस सर, रन करने के बाद इनपुट सर में इनपुट में ए लेना है। कैरेक्टर A। यस तो सर। एरर आ गया ना। सर इंटीजर क्यों से सर? थोड़ी ना आएगा। इंटीजर एक्चुअली क्या है, हम ए को ए इज अ करेक्टर लेटर, वी आर टाइप कास्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग? आई विल शो यू व्हेन वी आर स्टडीइंग डेटा टाइप्स एक्चुअली, है ना। जस्ट वेट, है ना। ये डेटा टाइप में सर मैं शो करने ORD वाला। का मीनिंग क्या होता है वैसे? ORD एक्चुअली लाइब्रेरी फंक्शन है जो पाइथन ने हमको प्रोवाइड किया है, जो कोई भी सिंबल है कीबोर्ड में उसको करस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू हमें बता देगा। तो सर एग्जाम में ASCII का है तो ORD से ही करना है? बिल्कुल कर दोगे ORD से, ठीक है ना। ओके सर। Sir, is there any function to convert ASCII code into a character? तुम डायरेक्टली टाइपकास्ट कर दो ना। और Okay, okay. और We can आस्की use वैल्यू का Canva. करेक्टर चाहिए। आस्की वैल्यू का करेक्टर कोड आपको चाहिए ना। आप टाइपकास्ट करके भी देख सकते हो, लेकिन टाइपकास्ट में वो देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। न्यूमेरिक वैल्यू आएगा ना। आस्की वैल्यू को हाँ होगा जरूर। आस्की वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए भी होगा, करस्पॉन्डिंग करेक्टर के लिए तो CHR परसेंटेज सी से, परसेंटेज सी से परसेंटेज सी। सर कैर फंक्शन। हाँ एक मिनट मैं The CHR. अभी एक मिनट जस्ट मैं अभी शो कर रहा हूँ इसको। एक काम करते हैं ना अपन, पहले आई में लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ORD और इसको लिखते हैं हम X। तो अपना X अपन को आस्की वैल्यू भी पता है और वो भी पता है अब, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ बाई को, तो ये आस्की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब मैं बाई को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ जेड में। जेड हमको फिर से हमको आस्की ही चाहिए, तो क्या लिखना है? केयर। कौन बोल रहा है केयर? CHR पता नहीं यार। सही लिखा है ये? Yes, sir. अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ A तो 65A, तो ये केयर पे तो एरर आ रहा है, मतलब केयर तो नहीं सर चलता है। CHR होगा सर, CHR वही होगा। CHR होगा। कैर तो कैरेक्टर रिकॉग्निशन, var कैर और कैर वो तो आ जाएगा। CHR होता है। को कन्वर्ट कर दिया ना वापस। तो फंक्शन तो बहुत सारे अवेलेबल है पाइथन में, रिच लाइब्रेरी है यहाँ पे, बहुत सारी लाइब्रेरी मेथड्स हैं जो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। बस आपको नेम थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ते चले जाओगे ना तो आप एक्सरसाइज करोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन सर इसमें तो हम लोगों को एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ा ना CHR जोड़ करके, ये नहीं अपने तो आप एक्सप्लिसिटली थोड़ी ना, ये मेथड है, डायरेक्टली कन्वर्ट थोड़ी ना कर रही है हमें। करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो हम इंटीजर वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग करेक्टर दे रही है, उसके करस्पॉन्डिंग अच्छा आस्की जो करेक्टर है वो दे रही है। हम कन्वर्ट थोड़ी ना कर रहे हैं अच्छा। एक्सप्लिसिटली, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सर अगर मान लीजिए एक वेरिएबल में हम लोग अभी एक कैरेक्टर ले लें और फिर क्या कहते हैं एक दूसरा वेरिएबल लें, उसमें जो है ये पहला वाला जो वेरिएबल लिया है जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टर लिया है वो डाल दें, तो वो तो इम्प्लिसिटली हो जाएगा। ये तो फिर उल्टे तरीके से हो रहा है ना, नहीं तो मतलब एक्स को एक्स में करने में जरूरत क्या है? एक्स तो डायरेक्टली खुद ही करेक्टर है ना। एक्स अच्छा। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ तो ये तो खुद ही करेक्टर फॉर्म में ही हाँ आएगा तो ना। अगर आपने एक्स कैरेक्टर लिया तो अगर आप मान लीजिए कोई दूसरा वेरिएबल लेते हैं उसमें एक्स डाल दीजिए, मतलब लेकिन वो जो दूसरा वेरिएबल हो वो INT हो, तो फिर नहीं तो क्या वो अपने आप? इंट ऐसे बनाते नहीं है ना एक्चुअली। दूसरी आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है? सर जावा। जावा में आप इंट बनाने के लिए आप यहाँ पे इंट ऐसे लिखते हो ना। हम्म। तो पाइथन में ऐसा कुछ होता नहीं है ना। पाइथन में तो हर एक वेरिएबल जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग उसका टाइप बन जाता है ना। अच्छा ओके सर। तो फिर अगर पाइथन हम में लोग ऐसा को नहीं करना होता है तो कि फिर हमने, कैसे करें? पाइथन में ऐसा नहीं होता है ना। पाइथन में एक तो पाइथन में हमको ऐसा और फायदा है ना, ये हमको कोई स्पेसिफिक टाइप का वेरिएबल बनाना नहीं पड़ता। आपको जो वैल्यू रखनी है वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली उसी टाइप का हो जाता है, हाँ सर हाँ सर। ठीक है ना। ये सब जावा में होता है। जावा में हमने इंटीजर बना दिया तो अब उसको करेक्टर बनाने के लिए टाइप का अलग से करना पड़ता है और उसको केयर लिखना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कास्टिंग होती है। जैसे अगर मेरे को इंटीजर सर जैसे टाइप कास्ट तो लेकिन फिर जावा में भी करते थे ना हम लोग, क्या कहते हैं अगर करना होता तो फिर जावा वो में टाइप ब्रैकेट में कास्टिंग क्यों कैर लिख करते थे? देते थे और फिर जावा वो में हो टाइप जाता। कास्टिंग क्यों करते थे? क्योंकि हमको अगर फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करना है तो टाइप कास्टिंग करना पड़ती थी। हाँ सर, क्योंकि वो लेकिन ज्यादा बड़ा यहाँ, डेटा टाइप था और फिर उसमें हाँ, छोटे वाले में करने के लिए वो जैसे करना। अगर अब देखो, अगर अब मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ बी और बी में एक्स डायरेक्टली डाल सकता हूँ ना मैं। बी का भी मैंने कोई टाइप ही नहीं दिया ना। हाँ सर नहीं दिया है। अगर तो मैंने सर बी जावा का में,
तो अगर मैं इसका बी डाल दूं तो automatically फिर एक ये तो type का बी string बन ऑटोमेटिकली जाएगा। कैर बन जाएगा ना सर? हाँ, स्ट्रिंग बन जाएगा ये, अच्छा ओके। ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बन जाएगा। तो इस बी में मैं चाहे इंटीजर डालूं चाहे फ्लोट डालूं, सपोज करो मैं बी में 4 डाल दिया, अब मैं बी में हाँ एक्स को भी रख सकता हूँ ना, बी एक्स इक्वल टू एक्स, मैं ऐसा रख सकता हूँ ना, कोई एरर नहीं आएगी यहाँ पे। हाँ ठीक है। समझ में आ गया ना, जबकि ये चीज वहां जावा में नहीं कर सकता था मैं ऐसे। लेकिन सर अभी तो फिर ओवरराइट हो जाएगा ना, b इक्वल टू 4 से b इक्वल टू x, फिर वो ओवरराइट तो कैरेक्टर आ जाएगा उसमें। नहीं, ओवरराइट नहीं होगा, अभी भूल गए आप, अभी मैंने बताया ना 4 आया, कोई दूसरी मेमोरी होगी, एक्स आएगा तो दूसरी मेमोरी पे पहुंच जाएगा ना ये। अच्छा ओके, हाँ हाँ हाँ, हो ठीक है गया ना, सर। ये सी और सी प्लस और जावा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट याद अच्छा रखना है। पाइथन हाँ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, पाइथन में हमको दूसरे तरीके से ट्रीट करना है ना। ओके सर ओके। ओके ना, लैंग्वेज के फीचर्स हैं एक्चुअली ये, ठीक है ना। हम्म। Okay, so I am showing your expression can be written like that. I will also share this notebook file also with you, so you can exercise with on your computer also, है ना? And I will ओके upload this on the LMS also, है ना? So this is a variable and data types. All these things are here. So I want to show you data types also so that you can know everything about the data type, है ना? यहाँ पे डेटा टाइप वाला ऑप्शन होगा, एक जस्ट डेटा टाइप्स। तो मेरे को ये जस्ट 3-4 स्लाइड है तो ये और कवर करता हूँ। हैव यू टाइम? कोई क्लास तो नहीं है अभी? सब 130 पे है। 1:30 पे ना, तो कोई नहीं, 10 मिनट चाहिए मेरे को बस, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। नो ठीक है सर। ना? जिससे क्या है ना, वो थोड़ा क्वेश्चन आंसर में टाइम चला जाता है, तो ये चीज थोड़ा सा कवर नहीं, डेटा टाइप पढ़ा दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा डेटा टाइप। सो देयर आर अ डिफरेंट डेटा टाइप। डेटा टाइप्स मींस type of information that you are storing in the computer, that is called data, and the that is called data. And what is the type of that information can be of type integer, float, or numeric, or a string, like that is called types of that data. So that is called data type basically. So different kind of data types can be happen in the Python programming. Okay, so these are basically specific for the programming language. In some different programming language you will find different kind of data types, है ना? So here basically data types are categorized in the two form, mutable and immutable. So basically immutable and mutable. Mutable means if you have stored some information in some variable, then if the value of that variable can be changed, that is called mutable. If the value of that variable cannot be changed, that data type of that data type is called as a immutable. Means we cannot change the value of that later, है ना? Okay, so here this is an example. Here you have stored 2 in the x variable. So 2 is the actually numeric value we have stored in this x. That numeric value is of type integer, as numeric value without decimal point is called integer value. That integer value is denoted with the int type, AINT. That is case sensitive and you have to write as it is. So you can check the type of that value. X equals to 2, then you can check by type or x. So then type of that So type x, is a syntax. yes, this is a rule. This you have to write as it is. So I will show you also with the notebook. You can see here in the data type section, values and data type. Here you can see, है ना? Default type, if I write here a equals to 2, है ना? Then you can see. So type of that a is int. Is it clear now? Yes, sir. Okay. So next I am showing to you, just wait. ये मेरे को क्लोज करने दो, एक नया पीपीटी ओपन करते हैं। Okay na, so just I am showing to you. So this is a type, you can see this is an integer. If I assign this value to 3.4, so it will be displayed as a float, है ना? Or if I assign this value as a double quote hello, displayed as a string str, है ना? Even I assigned a single value, then it will be also become as a str, है ना? Is it clear now? You can convert a different type of value into different data type. Like you can convert an integer value into the float type, or float value into the integer type. Like if you have assigned here 4.5, so this is
basically type you can see float. Then you can convert this value into the integer like b equals to float, okay? Or you can specify here a. So which value you want to convert? Actually, we are converting a as a float to integer. Then you can specify here int. So this value will be converted into the form of integer. Then you can display print b. So b will be displayed as an integer value. You can see, है ना? 4 will be displayed. Is it clear? ये clear है? सर हाँ बताओ. सर जैसे अभी आपने कहा डेटा टाइप इम्यूटेबल भी हो सकते हैं, तो सर उन्हें इम्यूटेबल कैसे बनाएंगे हम? म्यूटेबल हम नहीं बनाएंगे, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर है एक्चुअली में. आप नहीं पढ़ोगे सर, इम्यूटेबल कि इम्यूटेबल उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती बाद में. नहीं, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, ये डेटा टाइप प्री डिफाइंड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सब ने प्रोवाइड हमको किए हैं, हमने नहीं बनाए हैं, ठीक है ना. तो इम्यूटेबल का मतलब है कि डेटा टाइप जो वैल्यूज है हम किसी वेरिएबल में डाल रहे हैं उसकी वैल्यू आप चेंज ही नहीं कर पाओ. अगर आप असाइन करते हो दूसरी वैल्यू, एक बार आपने वैल्यू दे दी, फिर आप बाद में उसको चेंज करना चाह रहे हो तो वो चेंज नहीं होगी. वो आप देखोगे यहाँ पे जैसे नंबर्स है, 4 को आप 5 बना सकते हो क्या? नहीं सर. स्ट्रिंग में मैंने जैसे लिख दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग में मैंने कोई वैल्यू लिखी, सपोज करो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ऐसे, मैंने हेलो करके लिख दिया, ये स्ट्रिंग वैल्यू है ना. अब आप देखो इस वैल्यू को, हेलो को क्या कुछ और बना सकते हो क्या? नहीं ना. तो ये एक इम्यूटेबल वैल्यू है, वैल्यूज को अभी चेंज नहीं कर सकते आप. दूसरी चीज जो बात कर रहे हैं टपल्स की, यहाँ पे टपल्स वी विल कवर. टपल्स मतलब आप कुछ वैल्यू, टपल्स को हम किसी एक वेरिएबल से रेफर करेंगे. जैसे एरे आपने पढ़ा होगा, अगर स्ट्रिंग एरे पढ़ा होगा उसमें क्या बोलते हैं सी एस सी प्लस या जावा में कहीं पे, तो एरे में हम कुछ वैल्यूज दे देते हैं. ऐसे टपल्स भी एक टाइप का डेटा टाइप होता है, वहां पे कुछ वैल्यूज दे देंगे. अब उन वैल्यूज को बाद में चेंज करना चाहोगे, आप चेंज नहीं कर पाओगे. इज इट क्लियर ना? तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर है, हम नहीं बना रहे हैं उनको इम्यूटेबल, है ना. और हम किसी को इम्यूटेबल बना भी नहीं सकते हैं कि भाई उसको चेंज कर दे. जैसे सी में अगर आप बनाते थे तो वहां पे जैसे रहता ना कांस्टेंट, एक कीवर्ड आता था, वो आप यूज कर लेते थे तो वहां पे वो चेंज नहीं होता. जावा में किसी ने पढ़ा होगा तो फाइनल कीवर्ड होता है. यस सर. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है ना. इज इट ओके ना? ओके ओके ओके. सो next we can see different data types are there. So we will cover basically here numbers, string, list, tuple, set, dictionary we will cover later. Okay na? So these are the data types you can see: integer, long integer, octal, floating point numbers and complex number. You can see basic type तो integer and floating ही point होंगे numbers में, है ना. long integer, octal और complex number, these are complex is a different types. You can see we can specify the complex number here. This is an example: a equals to 2 plus 5j. if you are seeing the type of a, that will be complex actually. तो complex number को हम directly दे सकते हैं. complex number का एक basically type है complex, है ना. type of a it is a complex. a, if you are seeing type of a later, and then a will become as a float. you can see यहाँ पे एक लिखा नहीं है float के लिए, ये थोड़ा सा missing line, एक line missing है यहाँ पे, है ना. so here if you are specifying a equals to this, then it will become long actually. so long type का भी आप होता है, लेकिन Python 3 में वर्जन के अकॉर्डिंग ये रिमूव कर दिया गया है, तो इसलिए ज्यादा उस पर टेंशन नहीं लेना है आपको. it will be removed in the later version. there is only So why type it is written L at the last? that is for long na. By default every value is considered as an integer. if you have written here L, specify the L, then it will become as a long, है ना. clear है ना? If we don't, it will be considered as integer. No, it is a long value means suppose integer value you can store in the memory. if you are taking a data type, then according to that data type one memory is allocated into the computer, है ना. तो integer के लिए suppose करो किसी according to the some compiler, if you have studied in C or C, कोई language study किया आपने, कोई programming language? So no. नहीं, कोई बात नहीं. जब हम कोई लैंग्वेज यूज करते हैं या वैल्यू स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में, तो ऐसे 4 स्टोर किया, तो ये 4 वैल्यू कितने मेमोरी में स्टोर होगी, हाउ मच मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर दिस 4, दैट इज डिसाइडेड बाय दैट टाइप ऑफ दैट वैल्यू. इट इज अ टाइप ऑफ इंटीजर. so according to the compiler, if compiler is using 4 byte for storing integer value,
then it will allocate 4 byte memory and then store this 4 value. If you are increasing this value, then 4, 5, 6, 7, 8, 9, then still this memory will be 4 byte. So according to the range of 4 byte, what is the maximum value that you can store in a given byte? Suppose a byte having a 8 bit. एक छोटा सा explanation दे रहा हूं. 1 2 3 4 5 7 8 8 बिट है. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन स्टोर? इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू कभी स्टोर कर पाओगे इसमें? मेरे को बता दो. all bits are 1. इज इट क्लियर ना? है ना? अगर 4 बाइट मेमोरी है तो वो 4 बिट्स की मेमोरी है तो कितना वैल्यू स्टोर हो पाएगा मैक्सिमम? तो ये वैल्यू क्या निकलेगी? आप निकाल के देख लो. 2 to the power 4 minus 1 और 2 to the power 8 minus 1, दैट इज 255. ये आप निकाल कन्वर्ट करके देख लेना. आप इस ऑल 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो. 8 1 लिखो और डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो. ये कन्वर्ट करके देखना. आप 3 1 लिखोगे तो ये 7 बनता है. तो 2 to the power 3 minus 1 डायरेक्टली ये फॉर्मूला ये आप लगा सकते हो और कन्वर्ट करके देखना चाहो तो देख सकते हो. 1 into 2 to the power 0, 1 into 2 to the power 1, 1 into 2 to the power 2. तो 2 to the power 2 4. सेकेंड 1 के लिए आपका क्या आ जाएगा? 2. इसके लिए 1. तो 4 plus 2 plus 1 that is equivalent to 7. Similarly it will happen with this one and this one. So it is 255. So there will be a limit ना. If you are using 4 byte then total number of bits कितनी हो गई? 32. तो maximum value that you can store 2 to the power 32 minus 1 ना. तो कोई लिमिट तो होगी ना किसी डेटा टाइप की. So if you are storing value larger than this limit, then how you can store? Then you have to increase the size, that is called long int. So long. So you have to make long. You want to store large value, then you can use this L. Is it clear ना? That is represented by long integer. तो सर कैपिटल L वेरिएबल नहीं ले सकते कभी? नहीं, ऐसे कैपिटल L एक वेरिएबल तो L एक्चुअली डिनोटिंग द L ले सकते हो. वैसे आई थिंक L वर्क करेगा. एक्चुअली एक टाइप के लिए होता है तो L वर्क करेगा. जावा में भी आप डायरेक्टली F लिख देते हो. तो यहाँ पे भी F वेरिएबल लिया नहीं है क्या जावा में? कभी आपने देखा है? ले सकते हो आप. देखो L equals to 4 ये ले सकते हो. लेकिन नंबर के साथ में एसोसिएट कर दोगे दिस L को, देन इट विल बिकम लॉन्ग. है ना? ओके सर. ठीक है ना? ये कोई कंपाइलर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है ऐसा. ठीक है ना? ऐसा जावा आपने पढ़ा है? जावा में F करते हैं टाइप कास्टिंग के लिए. 3.2 F कर दूंगा तो ये फ्लोट बन जाएगा. फ्लोट के लिए. हाँ, तो वहां पे लेकिन फ्लोट वेरिएबल के लिए अपन ऐसा भी लिख लेते हैं. अब मैंने लिखा फ्लोट F इक्वल टू 3.2 और 3.0 ऐसा लिख लेते हैं ना जावा में. तो सेम थिंग विल बी हैपन हियर. है ना? कंपाइलर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है ये चीज. सर eval का क्या फंक्शन होता है? अभी अभी यहाँ पे है eval नहीं है ना? मैं अभी बताता हूँ. eval का मतलब होता है when you are taking a value, or value can be a numeric type, then you have to specify that eval. डिफॉल्ट वैल्यू जो इनपुट में आती है वो क्या होती है? स्ट्रिंग होती है ना? Yes sir. Even you are providing 3 will be considered as a string, or 3.0 will be also considered as a string. With dot is a symbol ना, वो 0 is a symbol, 3 is a symbol, है ना? तो फुल स्ट्रिंग इसको स्ट्रिंग कंसीडर करता है. बट हमें इफ यू वांट टू रीड द वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द इनपुट एज अ न्यूमेरिक वैल्यू, देन यू कैन स्पेसिफाई लाइक हियर आई एम शोइंग टू यू. just see here I am showing to you. You can see here just see input x, like you can provide eval, then you can take this value. अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? अब ये वैल्यू क्या हो गई आपकी? न्यूमेरिक वैल्यू हो गई for taking numeric input. Then yes, it means you can provide 3.4, it will be displayed as a 3.4, and you can perform by equals to 3.4 x plus 3.4, that it will be printed as a 4. सॉरी एक मिनट रुक जाना, एक मिनट. प्रिंट y लिखना पड़ेगा. I print and then y. Is it clear ना? So you can see 4, then it will be displayed as 7.4. If you are providing it as a 4.5, then it will be displayed as 7.9. ओके ना? तो न्यूमेरिक इनपुट के लिए है. अब अगर आप इसमें फ्लोट स्ट्रिंग दे दोगे, जैसे मैंने हेलो दे दिया, तो एरर दे देगा. ठीक है ना? अब न्यूमेरिक इनपुट लेने के लिए है. बाय डिफॉल्ट एवरी वैल्यू इज कंसीडर्ड एज ए स्ट्रिंग.
तो आप इवल स्पेसिफाई नहीं किया तो बाई डिफॉल्ट स्ट्रिंग रहेगा, तो आप दे दोगे 4.5, तो ये देखो एरर देने लग गया ना, क्योंकि x इक्वल्स टू 4.5 इट इज अ स्ट्रिंग और यू आर एडिंग विद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, दैट इट मींस इट इज एन एरर। सो इवल का यूज होता है न्यूमेरिक इनपुट लेने के लिए, है ना? यस सर, ओके, थैंक यू। ओके ना? ओके। इनपुट कहाँ यूज करते हैं? क्या? कहाँ पे यूज करते हैं? प्लीज पार्डन प्लीज, क्या कह रहे हो, दोबारा से बोलना। सर इनपुट कहाँ पे यूज करते हैं? Input, okay, so input means when you want to take input from the user. Actually, suppose this is actually one program you have written, you want to perform some calculation, like you have taken by as a by equals to I have written like eval। देखो मेरे को आपको एक प्रोग्राम बनाना है that will take or that will ask from the user for the some input, है ना, and provide the addition of these two value, है ना। वो दो वैल्यू के लिए यूजर से पूछता है और दो वैल्यू का सम प्रिंट करना है हमको। तो दो वैल्यू आप यूजर को प्रिंट करोगे ना, जैसे कैलकुलेटर में आपसे इनपुट बोलता है कि नहीं बोलता है, एडिशन परफॉर्म करना है या सब कुछ भी परफॉर्म करना है, तो इनपुट आप दोगे ना कोई वैल्यू, आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है, प्रोग्राम बनाना है, वो क्या करे, जस्ट एक मिनट सी, ठीक है ना। तो ये इनपुट का मतलब होता है, अगर आपने ये लाइन लिख दिया तो जब इस प्रोग्राम, ये टोटल इज अ प्रोग्राम, एक्चुअली दिस लाइन ऑफ कोड इज अ कंप्लीट प्रोग्राम, यू कैन अंडरस्टैंड इट एज है ना, एक कंप्लीट प्रोग्राम है, बट एक पेज में आप मल्टीपल प्रोग्राम लिख सकते हो, ये प्रोवाइड होता है जुपिटर नोटबुक के थ्रू, आप ऐसा कर सकते हो, है ना। हु इज आस्किंग प्लीज इनपुट? ओके सर। ठीक है ना। तो इनपुट इज जस्ट ए स्टेटमेंट दैट वी हैव टू राइट इन द सेम फॉर्म एज इट इज। व्हाट इज योर बैच नंबर प्लीज? सर EB10। EB10। एक भी लैब अटेंड किया आपने? यस सर, अभी इसके बाद यानी इससे पहले एक भी कोई लैब अटेंड की है? करिए सर। तो उस लैब में आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, उसमें इनपुट का यूज किया हो? सर देखा करा है, था भले ही नहीं वो, बनाया है, आपको बनवाया हो, वैसे ही दिखाया हो? सर करा था, वो कंफर्म करा था मीनिंग इनपुट का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इनपुट का मतलब होता है कि हमको इनपुट लेना है यूजर से, उसके लिए हमको डायरेक्ट इनपुट लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके सर। ओके, कुछ भी क्वेरी है, सिली से सिली मिस्टेक आप पूछो, अगर डाउट क्लियर नहीं होगा तो आप फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करोगे, है ना। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डेटा टाइप से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल रहे हो, तो कॉम्प्लेक्स टाइप का इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। एल लिख दिया तो लॉन्ग टाइप का वैल्यू बन गया, और ऑक्टल के लिए ओ स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई की 0O, यू कैन सी, तो इट इज ऑल्सो रिटेन हियर, यू कैन सी डेटा टाइप में है, ऑक्टल में मैंने स्पेसिफाई किया। ये देखो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू है, ए नेम मार्क्स। तो ए इज इंटीजर टाइप वैल्यू ले रहे हैं, नेम को ये स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, मार्क्स को फ्लोट कंसीडर कर रहा है। ए नेम ऑलरेडी आई हैव डिक्लेयर्ड अबव, है ना, यू कैन सी ए नेम मार्क्स दैट आर ऑलरेडी गिवन अबव, है ना। सो टाइप ऑफ दिस 1 2 3 4 5 अगर डायरेक्टली स्पेसिफाई करोगे तो इंटीजर आएगा, और टाइप ऑफ 1 2 3 4 5 डबल कोड में स्पेसिफाई करोगे देन इट विल बी स्ट्रिंग। If you are specifying 1 2 3 4 5 in double quote, then it will be string. Even in single quote, if you are specifying in single quote, you can see. If you are specifying single quote, then it will become as a string, है ना? Is it clear ना? So ABC, name, marks, all these things are, if you are specifying ABC as a value, or you are as a identifier, then it will be treated as a, ये ABC मैंने यूज किया यहाँ पे एक वेरिएबल, एंड देन ABC you are assigning some value, then ABC will be treated as a integer value, है ना। In the name I have specified that this is string, then this name will be treated as a string. Place Mumbai, this is a double quote, you can specify string in the double quote, then it will be treated as a string. Marks, here I have specified floating point value in this marks, then it will be considered as a float value. So these are the type, different kind of types you can use, है ना। Okay, so अगर तुम्हें किसी साइज पता करना है, व्हाट इज द साइज फॉर दिस, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस सिंटैक्स, इंपोर्ट सिस, तो सिस्टम के लिए होता है sys डॉट गेट साइज ऑफ x, सो इट विल शोन एज 58 बिट्स एक्चुअली, है ना।
It is clear na? So it will be increased when you are increasing, like if you are writing a 3, then it will be increased actually. 3 से increase होता जाता है. जब 4 लिखोगे तो 1 अब increase हो रहा है, 5 लिखोगे तो एक से increase करता जाएगा कैरेक्टर के लिए. So the size in the Python for a particular variable, it will be automatically also increase whenever it will be required, है ना? तो memory efficient बहुत होता है Python, है ना? ऐसा जावा और C++ या सी में नहीं होता है, वहां पे फिक्स्ड होता है साइज, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हो. यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बढ़ाता जाता है, लिमिट होती है उसके, तब तक वो बढ़ाता ही जाएगा, है ना? तो लार्ज कंप्यूटेशन, लार्ज डेटा पर कंप्यूटेशन, तो डेटा साइंस में पाइथन का यूज बहुत ज्यादा है. द एप्लीकेशन ऑफ पाइथन इज वेरी मच इन द डेटा साइंस एक्चुअली, है ना? Some are the built-in function that you can use in order to convert, है ना? You can convert the hex value into the octal value. So if you are specifying 171, so the hex value it is denoted as 0x. So when you are writing 0x, that means this is a hex value. When you are writing 0o, that means it is a octal value. So I have written also here in the slide, you can see 0o 11. So what is its 11? This is in the form of octal value. So there is a different kind of number system, octal number system, hexadecimal number system. Hexadecimal number system contain how much value it will contain? It will contain numbers from 0 to 15. So total 16 numbers. So but how will you will represent 10? 10 will be represented with A or small a. 11 will be represented with B or small b, है ना? So C will be represented as a 12, D will be represented as a 13, or E will be represented as a 14, और F will be represented as a 15. तो ये वैल्यू करेक्टर आ जाते हैं, स्पेशल सिंबल वहां पे 10, 11, 12 नहीं लिखते हैं. अगर मैंने यहाँ पे 19 लिखा है तो 19 का मतलब इस पे 1, इसको हम डेसिमल में कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? 9 हम किसी भी नंबर को किसी भी डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बाइनरी को कैसे कन्वर्ट किया था मैंने? If this is binary number system, then how you can convert into the decimal? You can just pick this one, 1 and 2 to the power 0, plus pick this one, then 1 into 2 to the power 1, pick this one, 1 into 2 to the power 2. ये जनरल फॉर्मूला है, आप याद रखो. ये बाइनरी के लिए 2 ले रहा हूं बेस. बाइनरी का रेडिक्स क्या है? 2. बट हेक्साडेसिमल का रेडिक्स क्या होगा? 16. ऑक्टल का रेडिक्स क्या होगा? 8. ऑक्टल में जो नंबर होती हैं वो 0 to 7 होती हैं. Then you can convert this 19 into the decimal. How? First 9 into 16 to the power 0, 1 into 16 to the power 1. So 16 plus 9, that is 25 in the decimal. Is it clear ना? ये ऑक्टल में लिखा हुआ है 11, लेकिन ये 11 नहीं है. डेसिमल में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो 1 into 8 to the power 1 plus 1 into 8 to the power 0. So 8 plus 1 that is 9. एक्चुअली ये 9 लिखा हुआ है, ये 1 नहीं है, ये 9 है. और यही 1 बाइनरी में क्या होगा? 3 होता है. 1 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0. So 2 plus 1 that is 3. तो डिफरेंट नंबर सिस्टम में यही 1 डिफरेंट वर्क करेगा. 1 अगर हेक्साडेसिमल में देखूंगा तो 1 into 16 to the power 1 plus 1 into 16 to the power 0. So that will become 16 plus 1. What is it? 17. Clear है ना? So you can convert any number into any or decimal system, or as well as you can convert into decimal to particular respective number system. जैसे डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 से डिवीजन किया था, बट ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम 8 से डिवीजन करेंगे. हेक्साडेसिमल के लिए हम 16 से डिवीजन करेंगे और रिमाइंडर लिखते जाएंगे और रिवर्स डायरेक्शन में रीड कर लेंगे. Is there any query for anyone? Conversion of number system from one number system to different number system? No. Yes. ठीक है ना? ये कन्वर्ट कर सकते हो. It is very easy. Okay. So you can see here this number is represented in the hexadecimal. So hexadecimal value is 8. You can also convert this number into the hexadecimal value into the integer value. You can directly see this is a 171, है ना? How it will be 171? ये क्या लिखा हुआ है? ए बी लिखा हुआ ना. ए बी को आप कैसे 171 अंडरस्टैंड करोगे? बाइनरी में चेंज करके फिर. हाँ, ए को आप लिखोगे a into 16 to the power 1
और b इंटू 16 टू द पावर 0। तो a को 10 मानो, 10 इंटू 16 क्या होगा 160, और b को क्या मानते हैं 11, 11 इंटू 1 दैट इज 171। आप डायरेक्टली देख सकते हो, क्लियर है ना। तो 171 ऑटोमेटिकली आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इफ आई एम स्पेसिफाइंग 111 and 2 दैट इज अ नंबर सिस्टम आई हैव स्पेसिफाइड। तो बाइनरी में इसको क्या बोलोगे 111 को 7। Excuse me, sir. यस Sir, is 0x before any number or any alphabet the syntax for hexadecimal? Hexadecimal, yes. It is Okay, for thank you, hexadecimal. sir. Okay. And when I have specified 0 O, if I suppose if I write here O and if O में number A B तो होता नहीं है, then we have to specify 4 5 5 6, then it will become as a 46. 5 into 8 plus 6, 40 plus 6 that is 46. It will be converted into the decimal, it will become 6 है ना। O stand for octal and X stand for hexadecimal. Is it clear now? Yes, sir. Okay, good. So it is also the some kind of a statement where I have written multiple statement you can write in the printf statement. 7.7 I have converted it to the integer, so I have written here int. So I have typecasted this value 7.7 into the integer, so decimal value after the decimal point value will be eliminated, so it will display direct 7. If I have written here 111, so it is a string value now, and I have written also 2 is means we have to specify or we have to convert it into integer with according to this base 2. So it will be 111 will be a binary value in the binary number system now. Then we can convert it into the integer using, so 111 will become as a 7 directly we can specify, we can convert this 7 as a string value into the integer directly and we can represent it as a 7. तो ये कन्वर्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, डायरेक्ट फंक्शन है। तो ये टाइप कास्टिंग हो रही है। तो डेटा टाइप हमने स्पेसिफाई कर दिया, उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ये वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। इज इट ओके ना? Similarly, true is the data type, so true will be true or boolean. It is a boolean data type. You can see if I specify here x equals to true. So what is the type of that x? What is the type of that x? Boolean. Bool. Yeah, ना? Boolean. हाँ, तो Bool. ये Bool. मतलब bool दे देगा, ठीक है ना? It will be boolean, ठीक है ना? bool करके दे देता है, ठीक है? You can specify. So every number can be converted into the string. ये लिखा है देखो 1.23 ये string as a represent हो रहा है, ठीक है? तो मैथमेटिकल फंक्शन यू कैन यूज, जैसे साइन कंप्यूट करना, साइन वैल्यू कंप्यूट करना, मैथ डॉट साइन, और यू कैन डायरेक्टली यूज क्लास ही चला रहे हैं, ठीक है। पाई बाई 2 का आप वैल्यू निकालोगे तो 1.0 आ जाएगा। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू फॉर साइन 90? पाई बाई 2 1, so it will be represented. So you can directly use some mathematical function by import math, है ना, और math dot sin, हेलो math dot pi by 2। म्यूट करो यार भाई, म्यूट। ठीक है ना? जस्ट आई एम ब्राउजिंग इट द होल। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, we have only half an hour break. Can we please have lunch because we have Yes, another yes, class? आप लंच में ही जाओ, अब मैं तो बंद ही कर रहा हूँ ना, खत्म हो गया ना ये तो। Thank you, sir. Thank you. कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दिया हुआ है, जस्ट 1 मिनट और अल्सो ना, मेरे को भी लंच करना है, मेरा भी क्लास है ना, ठीक है। तो ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। यू कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई कॉम्प्लेक्स नंबर, यू कैन कंप्यूट द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, ये वैल्यू आप डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हो यूजिंग दिस एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है ना। इज इट क्लियर? ये सेम है ना। Yes, और sir. ये Yes, वैल्यू sir. इनपुट ले सकते हो, वैल्यू इनपुट लेने के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है डायरेक्टली, है ना। सो आई विल आल्सो पुट दिस फाइल एट द LMS, you can download and you can execute with Jupyter. Those who have installed Jupyter they can directly run this file, है ना। सर कई सारी फाइल्स हैं, मतलब ये पूरा बन जाएगा इसका? ये की फाइल है, ये सिंगल फाइल है। आप देखोगे ना, ये देखो मैंने यहाँ पे रखा है पाइथन लेक्चर की क्लासेस है ना, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, एक सिंगल फाइल है। और जब ओपन करोगे आप, जैसे मैं आपको शो कर देता हूं कैसे ओपन करना है। जैसे आप कहीं पे भी जाओगे, जुपिटर ओपन करोगे, यू कैन सी जस्ट इट इज
डिस्प्लेइंग ये हट नहीं रहा यार। जैसे आप यहाँ पे जाते हो ना, ये डायरेक्टरी दिख रही है वेरिएबल एंड डेटा टाइप, तो इस पे क्लिक करोगे ना इस फाइल पे, तो ऑटोमेटिकली ये फाइल ओपन हो जाएगी। सर वो ऊपर पिन वाला बटन हटा के हट जाएगा। यस सर। सर ये राइट वाला राइट यस सर, ये तब भी नहीं हट रहा है यार। हट जाना चाहिए। वो हैंग हो गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। सर वो कर्सर हटाओगे वहां से तो हट जाएगा। अभी देखो, दोबारा से प्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा आपका फाइल। ऐसी फाइल बनाई है हमने, डिफरेंट डिफरेंट और डिफरेंट टॉपिक्स पे है ना, एक्सरसाइज के लिए आपको। ओके सर। ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज के लिए डिफरेंट है, डिफरेंट लेक्चर्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड है, ये ऑलरेडी हमने कर लिए। तो आपको जैसे जैसे लेक्चर ऑपरेटर्स आएगा अभी इसमें, तो ऑपरेटर्स पे आ जाएगा। ऑपरेटर की ये स्लाइड भी मैं शेयर कर दूंगा, है ना, कल ये वाली स्लाइड कल शेयर कर दूंगा। डेटा टाइप्स पे ही है बेसिकली, सारी चीजें कवर कर ली है इसमें। कुछ चीजें हैं जो नहीं कवर की हैं, बाकी का ऑपरेटर्स कवर करना है अपन को कल, ठीक है ना। जुपिटर का लोकल मतलब वो कब तक सेंड करोगे आप एलएमएस पे? अभी डाल दे रहा हूँ एलएमएस पे, अभी जस्ट वेट करो, इसी के बाद आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। हाँ सर। रिकॉर्डिंग्स के लिए आप डायरेक्टली मेरा वेट मत किया करो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रिकॉर्डिंग्स के लिए जैसे मैंने